welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. And today I'm here yet again with another interesting topic for you. So the topic that we will be studying today, it's going to be about reflex action and reflex arc. Yes, it's a very interesting topic from the chapter Neural Control and Coordination. Though it was not mentioned in the syllabus for the NEET of this particular year, but yet again, it comes out to be an important topic and there can be certain questions जो इससे related आ सकते हैं, ठीक है? And plus this topic is something which is of course related to the central nervous system. So of course we should never leave such topics. So let's get started with it. Yes. So सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि exactly reflex action होता क्या है, ठीक है? सो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो आपका एक इनवॉलंटरी एक्शन है. ओके, इट इज बेसिकली एन इनवॉलंटरी एक्शन टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. अब अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं, सो व्हाट एग्जैक्टली स्टिमुलस? स्टिमुलस इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल सिग्नल. अगर कोई एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है और आपका रिएक्शन जो निकल रहा है उस एक्सटर्नल सिग्नल के रिगार्डिंग या उस एक्सटर्नल सिग्नल के अगेंस्ट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली नोन एज एन इनवॉलंटरी action, which is also known as over here as reflex action. Right. So as I told you, stimulus is nothing but a signal or an event. जैसे कि अगर आप बहुत तेज धूप में खड़े हैं, ठीक है, and the harmful sun rays or the very strong sun rays are coming directly towards you, तो automatically आपका जो pupil है वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगती है. करेक्ट? सो दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट एन इनवॉलंटरी एक्शन टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. तो यहाँ पे जो आपकी सनरेज है वो हो गई एक एक्सटर्नल स्टिमुलस और आपका जो आंखें बंद करने वाला रिएक्शन है वो आपका हो गया एक इनवॉलंटरी एक्शन. सो व्हेनेवर एन इनवॉलंटरी एक्शन takes place against external stimulus, that particular action would be considered as reflex action. Correct? The second point to understand is, of course, it is not under conscious control. सीधी सी बात है, अगर ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है तो कोई भी इनवॉलंटरी एक्शन आपके कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते आप, राइट? क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर रहे या आप ये जो वाले जो एक्शंस है, आपके जो इनवॉलंटरी एक्शंस है, ये आप सोच समझ के नहीं कर रहे. करेक्ट? सो दिस इज एन इनवॉलंटरी एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस नॉट अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल. इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली ओवर हियर. Correct? Other than this, it occurs through the spinal cord. So yes, it is related to the central nervous system and as we already know कि central nervous system के हमारे दो important parts होते हैं. One is the brain and second one is the spinal cord. Correct? So यहाँ पे अगर मैं specifically reflex action की बात करूँ, so this takes place through the spinal cord. Correct? जितने भी आपके reactions आते हैं, जितने भी आपका stimulus transfer होता है, वो सारा कुछ spinal cord के through होता है. And yes, after this it enters the central nervous system and from there the reaction comes. So it's like a cycle going on over here. But if you ask me, the main center of the reflex action or the reflex arc that's taking place, it's always going to be the spinal cord for reflex action. Correct? Moving ahead, now we'll be talking about the reflex arc. So what exactly is reflex arc? Reflex action तो अभी हमने समझ लिया, right? अब अगर मैं आपको reflex arc की बात बताऊं, so it is the path over here that stimulus takes to travel and generate a response. हमें पता है कि यहाँ पे जो भी सिनेरियो हो रहा है, जो भी एक्शन जनरेट हो रहा है, वो एक स्टिमुलस के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है? सो देयर इज एक्चुअली अ स्पेसिफिक पाथ जो कि स्टिमुलस ट्रैवल करता है. दैट स्टिमुलस travels a path, it reaches the central nervous system and then a action or a reaction is being generated from the central nervous system. तो वो जो entire path होता है उस stimulus का, that entire path would be considered as the reflex arc. For example, here is a stimulus. Okay, the stimulus can be anything. The stimulus can be anything. जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में हमने देखा that sun rays are playing the role of a stimulus. कोई hot object, कोई very cold object, या the bite of a mosquito. Anything can be the stimulus over here. The stimulus takes a path
right? It reaches the central nervous system, and as soon as it reaches the central nervous system, a reaction is generated from the central nervous system. Okay, so this entire path over here, which is taken by the stimulus to get a reaction from the central nervous system, this entire path would be considered as your reflex arc. Correct? So it is a coordinated mechanism, and it involves certain receptors, sensory neurons, spinal cord, and the motor neurons. So these four things are extremely important over here. Receptors जो हमारे different body parts में present होते हैं, ठीक है? Suppose हमारे skin में अगर temperature के लिए receptor है, that would be known as the thermoreceptor. करेक्ट? तो इस तरीके से बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कोई स्टिमुलस, द स्टिमुलस इज प्लेइंग इट्स रोल, एंड वो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं तब उस स्टिमुलस के एक्शन से। जैसे ही स्टिमुलस के एक्शन से रिसेप्टर एक्टिव हुए, देन व्हाट हैपेंस, देन द सेंसरी न्यूरॉन takes a pathway to the central nervous system. From there, a reaction is generated, which is performed or taken by the motor neuron. Correct? And that is how a reaction comes against a particular stimulus. So now we are going to understand this with the help of a diagram, so it will be more clear for you. As you can see over here, this is the diagram of the reflex arc. Okay? यहाँ पे एक hot object पड़ा हुआ है, ठीक है? इस हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही इस हैंड ने टच किया, सो द thermoreceptors of the skin are activated. Suppose this is a hot object. If I touch this hot object, and quickly I'll take back my hand, right? So this is reflex action. But इतने milliseconds में भी, the pathway has taken place over here, and here we are trying to understand that pathway only. So this over here is a hot object. जैसे ही इस हैंड ने इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, the thermoreceptor present in the skin got activated. जैसे ही thermoreceptors एक्टिवेट हुए, उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल पास किया. ओके, सेंसरी न्यूरॉन टेक्स दिस पाथवे टू स्पाइनल कॉर्ड, correct, which is a part of the central nervous system, and this particular path would be known as afferent pathway. Afferent pathway, correct? जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड तक ये सिग्नल पहुंचा, then the message goes to brain, and from here a signal releases that quickly we have to take the hand back, okay, because the object is hot over here. So that signal is taken by the motor neuron to the effector organ, and in this condition the effector organ is the hand, because the hand is touching the hot object. So motor neuron will take that signal and it will pass to the effector organ. As soon as it is passed to the effector organ, the hand will be moved away, and this pathway, जो motor neuron जो pathway ले रहा है, उस pathway को हम कहेंगे efferent pathway. Efferent pathway, correct? So now if I explain you, or if I summarize this entire thing, there is a stimulus. As soon as the stimulus reacts, receptor gets activated, correct? receptor जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, वो किसे सिग्नल देता है, वो सिग्नल देता है सेंसरी न्यूरॉन को. Sensory neuron gets the signal, and sensory neuron passes it to the central nervous system, and the pathway which is taken by the sensory neuron towards the central nervous system, this pathway is your afferent pathway. Correct? अब क्या हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक रिएक्शन जनरेट हुआ कि we need to take the hand back in this particular case, right? That thing is taken by the motor neuron. That signal from the central nervous system to the organ would be taken by the motor neuron. और ये जो pathway है, जो central nervous system से signal आ रहा है motor neuron तक, this pathway is known as efferent pathway. मोटर न्यूरॉन से
this signal goes to the effector organ, और जैसे ही इफेक्टर ऑर्गन तक ये सिग्नल पहुंच जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है रिएक्शन. Correct? So this is the entire pathway which is taking place from stimulus till the reaction which is taking place against the stimulus. Correct? So this was all about reflex action and reflex arc over here. So thank you so much. I hope that you enjoyed this session and you know particularly understood each and everything about the reflex action and reflex arc. Thank you.